तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारती टेक चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सैमसंग ने अभी एक ट्रेलर लॉन्च किया है जो कि बहुत ही शानदार है और नाम सुना होगा आपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3। जी हाँ, इसके बारे में बहुत सारे ऐसे न्यू फीचर्स हैं जो शायद ही आपको पता हो। अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 है तब आपको यह जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या-क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, वो सब हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं इसके ट्रेलर के रूप में, जो कि अभी हाल ही में जल्द ही लॉन्च हुआ है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस ट्रेलर्स को कि कैसा इसमें आपको मिलता है। Have you ever heard of blood oxygen? It's also called SpO2. As you know, no one can live without oxygen. When we breathe it in, it gets delivered to the hemoglobin in our red blood cells and carried throughout our bodies. Blood oxygen measures how much oxygenated hemoglobin is in our blood. If it's high, there's enough oxygen going around the body. It has a positive effect on brain function, immunity, and stamina. But what if it's low? Low blood oxygen can cause serious problems for the body. If blood oxygen is at 95%, it means that 95% of the hemoglobin in our blood is carrying oxygen. Blood oxygen levels usually range from 95 to 100%. Values under 90% are considered low. However, the range may vary depending on the individual's health condition or the surrounding environment. Blood oxygen can help us monitor lung function. This can be especially helpful for those with chronic heart or lung disease. So, how do we measure blood oxygen? With the Galaxy Watch 3, you can measure blood oxygen easily. When measuring blood oxygen, your arm should stay in a fixed position. For accurate measurements, wear the Galaxy Watch 3, 2 finger widths up from your wrist, and make sure the strap is snug so that the watch doesn't move. Then, open the Samsung Health app. Scroll down the list of options and tap on the blood oxygen icon and press the measure button. Don't move until the measuring process is complete. All right, I'm 97%. The mobile Samsung Health app also makes it easier to check your blood oxygen. How about measuring yours too?